one that homie put out on Twitter is the tattoo on my neck, and that's actually a picture he took. अच्छा, आपके चाचू को आपने कुछ ये टिप्स शेयर किए हैं या फिर उन्होंने आपको कुछ वैक्सीन मैं कौन होता हूँ? द बेताज बादशाह, जो बेनाम बादशाह है दाढ़ी के, जिन्होंने आई थिंक ही इज द फर्स्ट एक्टर हु इंट्रोड्यूस द मुस्टैच टू आवर मेन स्ट्रीम कमर्शियल हिंदी फिल्म हीरो. तो उन्हें क्या बताऊंगा, मैं क्या टिप्स दूंगा? he's been iconic with his stubble and his mustache. अच्छा, ये स्टबन की बात हो रही, तो आज तक आपकी किसी गर्लफ्रेंड को आपके स्टबन चुभे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा था, आज तक मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को. मतलब चुभे नहीं है इसका मतलब? क्लीन शेव करके ही गए हो हमेशा? जी, क्लीन शेव में ही गए हो हमेशा? क्लीन शेव में गया हूँ. कहाँ गया हूँ? आपकी गर्लफ्रेंड के पास? नहीं, उनको दाढ़ी नहीं चुभती. ये आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि women don't like the stubble या चुभती है. आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया, इवन व्हेन आई हैव बीन विद अ स्टबल. यू डोंट लाइक इट? चलिए मैम, आपकी और मेरी जोड़ी तो नहीं बन पाएगी फिर. ठीक है. Women have to accept me with my stubble. क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप हमेशा सीरियस सवाल पूछती है ना. Since you started trimming, you said at the age of 15, so undeniably we can say you were hairy. I still am. नहीं, यूजुअली बच्चे जब होते हैं ना, जब नहीं होता है तो दे कीप ट्राइंग, लाइक दे हैव द फियर कि यार मेरे को ये दाढ़ी होगी कि नहीं होगी. मतलब अब एग्जैक्टली याद नहीं कितना हैरी था, पर आई एम श्योर मैं हूँ अनिल कपूर का नेफ्यू हूँ, तो समझदार को इशारा काफी होता है. मैं आई वाज रिलेटिवली एट अ यंग एज. बहुत अजीब, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन टुमारो. आई वाज हैरी एट द एज ऑफ 15. मतलब जो लड़कियां शायद कभी लाइफ में मिलने आती, वो ये सोचे कि अच्छा 15 साल की उम्र से बाल थे इसके बाद. शीश. Okay, since you were talking about metrosexual men, so what do you do usually? How many times do you trim your pedicure and manicure? मैं तो फेशियल भी कराता हूँ. What are the 3 things if you would like to count? बस सिर्फ वैक्सिंग बची है अब. Seriously, on a serious note, as a metrosexual man, what are the 3 things you do weekly, or fortnightly, or monthly? 3 things. जी, पेडिक्योर कराता हूँ. वो मैं I cannot disagree with that. वो मैं कराता हूँ because I think I wear a lot of flip flops. मैं चप्पल्स में बहुत घूमता हूँ, तो I think it looks really bad if you have long nails and bad looking feet. A lot of people end up noticing your feet. So that's one thing. मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ every couple of months to make sure that my teeth look nice. I think that's something that I like, that my teeth should look nice all the time. और दाढ़ी ट्रिम करता हूँ ठीक से हर रोज रात को सोने के पहले. हम जो रोल करते हैं उसके कंटिन्यूटी की वजह से मुझे तो हर रोज करनी पड़ती है, बट इफ आई एम नॉट शूटिंग एवरी कपल ऑफ डेज आई एनीवेज ट्रिम माय बियर्ड. वरना क्या वो थोड़ी अजीब ग्रोथ हो जाती है. इट लुक्स अनइवन, दैट डजंट लुक नाइस. सो दीस आर द 3 थिंग्स दैट आई डेफिनेटली डू. With stubbles, or you also are averse like the lady? No, I like clean shaven men. You like clean shaven men? Yes. निकल जाइए यहाँ से आप. All right. I want to ask you. You're also, apart from the stubble that you are sporting now, and you always sport in most of your movies. In the next coming movie, you're sporting a tattoo on your back. Can you tell us a little bit about that? I have 3 tattoos in Finding Fanny. In fact, once you guys get out, there's a video also that we uploaded today. The trailer is going to be out after 2 days. I have 3 tattoos in the film. The one that homie put out on Twitter is the tattoo on my neck, and that's actually a picture he took. It would be nice if I speak about Finding Fanny when the trailer's out, and I go into details of that. But I'm glad that the audience on Twitter and even generally the response has been very positive. The media is excited. The audience members are excited to see a different film. I have a French beard. I can tell you that in the film. So it's not a complete stubble look. I have a French beard. It's like a goatee in the film. Which you'll see in the trailer. Yeah. Arjun, another question. You're known to be close to Salman Khan. We always know that. Yes. You also want to work with Shah Rukh. Yesterday at the iftar party, they hugged, and there's been so much talk about both of them whenever they're seen, during these parties. What do you have to say about that? I would hand both of them to one trimmer and say, exchange it. That's all. What do you want me to say about 2 people who have their individual lives? At the end of the day, I don't have an opinion on that. That's very personal for them. They've had an equation. They are friends. They were friends. Now they hug and meet up. It's great. It's fantastic. All right. Thank you so much.